Yeah, hello everyone, and welcome to the live analysis session and the student feedback on CAT XAT 2023. We have so many students with us, so we'd love to listen to their reaction first, and then I shall be sharing my predictions on what can be the cutoffs for various sections, right? And for the overall cutoff for BM and other institutions. So we welcome you all, everyone here, right, on this channel, Mission Cat, and I welcome Abhishek, Yogesh Swami, Jayant Rathi, and Saket. I hope your voice is audible to me. My voice is audible to you, Abhishek, Yogesh, Jayant. Yes, sir, it's audible. Yeah. You can switch on your camera so that we can, put you live in the session. So, hi guys, this is the live analysis for XAT 2023. We are taking the student reaction. How was their exam and what was their kind of an attempt, how they felt about this particular examination. Right. So, starting with Yogesh. Yogesh, can you just tell me, right, what is your, attempt today and how you find this particular examination called XAT? So today I attempted around 56 questions. Uh, I think quant was easy. Uh, Right. Decision Uh, making was also easier because there were no ascending, descending order questions. huh. And Right. RCs were also bit easy compared to previous year exams. So I Okay. think it was bit easy from last year. लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली आपको इजी लगा है, जो Yes. एग्जाम लगा आपको, यू फाउंड इट टू बी इजियर देन द लास्ट ईयर, राइट? Yes. सो आप अपना अटेम्प्ट बताएंगे, व्हाट विल बी 56 योर, क्वेश्चंस किए हैं सर टोटल। हाँ कितने किए हैं? 56। 56 क्वेश्चंस किए हैं, 56 क्वेश्चंस किए हैं, वेरी गुड। सो 56 क्वेश्चंस किए हैं आपने। क्वांट में कितने, डीएलआर में कितने, वीएम में कितने? क्वांट में सर 6 क्वेश्चंस लीव किए हैं। हाँ डीएम में हाँ। 5 क्वेश्चंस लीव किए हैं। ओके। और वीएआरसी में भी अराउंड 6 और 7, पता 8 या 9 ऐसे लीव किए हैं। 8 और लाइव लीव किए, ठीक है। ओके। अच्छा ये बताओ, आपको आज जैट के बाद एक गुड न्यूज़ मिली है। वुड यू लाइक टू शेयर द न्यूज़ विद दिस एवरीवन? यस। राइट, सो हाँ आई बताइए। रिसीव्ड आई रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद के आपका यस। इंटरव्यू है, राइट? यस और सर। यू हैव टू फॉलो दिस। आई कांग्रेचुलेट यू बिग टाइम for थैंक यू सर। making it the best B school in the region, in the Asia, right? I am Ahmedabad. Wish you a great luck for your GDPI preparation. Okay, Saket थैंक यू। Agarwal, how are you, dear Saket? Saket, can you listen to me? Hello. Okay, so we'll come back to Saket. Yogesh, now you have seen, the ZAT exam, you have seen the CAT exam. For the students who are preparing next year, would you like to tell the difference between these two exams? आई थिंक आफ्टर द completion of CAT exam, the Uh-huh. more focus should be on decision making because that's the Okay, main differential factor. right. बिकॉज कैट के लिए जो हम क्वांट करेंगे वो सफिशिएंट ही होगा जैट के लिए भी। Uh-huh. Right. आरसीज के लिए थोड़ा रीडिंग इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज दे आर बिट डिफिकल्ट देन कैट। Okay. एंड फोकस ऑन जीके ऑल्सो बिकॉज इट्स ऑल्सो स्कोरिंग थिंग। वन वीक Right. में कर सकते हैं। तो डिसीजन हाँ, मेकिंग इज द मेन थिंग इन जैट। तो मेन हाँ। उसी पे फोकस रहना चाहिए। Okay. We have a question from Honest Review, that was there a save option in the essay question? Yes, there was a save option in the essay question. And I think even if you have not saved, they will consider that because many students are not able to, save that. They have not pressed the save button exactly. Maybe we should write on everyone's behalf to consider that option as well. So, Jayant, can you listen to me, Jayant? Jayant Rathi? Yes, good evening, sir. Yes, sir. Good evening.
आपका कैट उतना अच्छा नहीं गया, बट आई गॉट टू नो यू क्रैक्ड जैट इन अ बिग वे. आपका बहुत अच्छा गया है. सो वुड यू लाइक टू शेयर विद अस योर जैट स्कोर दिस डे? Sir, I have attempted 57 questions, out of which 17 are from quant, 21 from verbal, and 20 from decision making. Okay, okay, okay. So overall a good attempt, right? Yes, sir. आंसर की से मैच कर लिया होगा. क्वांट कितने ठीक है? Sir, around 12, 13. 12, 13. So that's a good number. But given your this thing, I think 14 or 15 or maybe more than that. Right, Yes, right, sir. right. I was also thinking the same. Yeah, right. Okay, okay. Thank you very much, Jayant. I wish you all the very best for your GDPI and future endeavors. And भाई अगर आपका कैट अच्छा नहीं हुआ, कोई और एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो आई माई सिंसियर एडवाइस इज टू यू नो make sure that you focus on your non-cat examination, so that you can get into a good B school, right? So that you can get into a good B school. Not being able to crack cat is not the end of the game. You can very well start with the other examination. You can very well crack other examination, right? Okay, so guys, if we talk about your ZAT score, so I would love you to send me the ZAT score, ZAT attempt, sorry, not the score, attempt, and your reaction on difficulty level of this thing. We have Akshay Rathi joining us. So, Akshay Rathi, can you listen to us? Akshay Rathi, hello, hello, Akshay Rathi. Good evening, sir. Good evening, beta. How was the exam? Sir, exam was good, sir. Okay, okay. Actually, it was not that difficult. If you look at the previous year's questions, the difficulty Uh-huh. level was a bit on a lower side this time. Okay, okay, okay. Uh-huh. So difficulty you found it on lower. So according to you, this should go up. Okay, we have with us Yogesh also. Yogesh, I would love to listen to your understanding on the cutoffs where it should land. आपको क्या लगता है कहाँ लैंड करेंगी कट ऑफ्स? सर लास्ट ईयर से तो ज़्यादा ही होंगे कट ऑफ्स फॉर श्योर. हाँ हाँ हाँ. ओके, लास्ट ईयर से ज्यादा ही होंगी. कितनी ज्यादा होंगी कट ऑफ? कितनी ज्यादा होंगी? सर मैंने क्वांट की स्ट्रीम यार्ड में लिंक भेजा है. तो गाइस, देयर इज ए लिंक ऑन द स्ट्रीम यार्ड. So if you want to be part of this live show, you can click on the stream yard and be live here, right? So and share your experience of your ZAT examination, so that the students preparing next year can get benefit out of it, right? We also have with us Parul Arora joining. Parul, okay, Yogesh, yes. Like last year, it was you were getting 93 percentile, somewhere around 330 marks. So this year, Yogesh, सर आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट नंबर बट इट्स गोना बी मोर. okay, it's gonna be more. Okay, I'll try to come to the exact numbers. So Parul is also with us. Parul, good evening. Good evening, sir. Yeah, so thank you very much for helping me preparing the memory based paper. So guys, अगर आपने memory based paper अभी तक नहीं देखा है, please do see the memory based paper and try to match the answer key for the paper. I have made a video also on this, so hopefully that video should help you understand how you attempted the paper. So Parul, what is your attempt in that? So 75 questions. 75 questions, right? So can you switch on the video so that I can put you on the stream as well? Yeah. So 70. How many questions? 75. 75. That's I think a huge attempt, I would say, right? काफी अच्छा attempt है पारुल, जो आपका attempt है. So you appeared for CAT, right? You got a Yes. decent score. Uh,
it was a good amount of time we had, between 21st or 22nd, we were having the CAT result out, right? Right. And 8th of January, after 14, 15, or maybe, yeah, 16 days, you have that. So, did you prepare for that in these 16 days? No, sir. Like I got into my comfort zone in the 16 days, I would say. Like I was not that Okay. prepared for that. Like the way I Okay. was But still, prepared for you could do very well in that exam, right? Yeah. So, what is the number of quant questions that you could do right? that. Quant questions, 18 to 19, I'm expecting like they are correct on 22. And Good. DILR, I can say like 4 on 6. Yeah. Okay. Jayant, Yogesh, this honest review is asking, sir, can you ask someone if there was a call save if option was there? I think save option was there in Yes, the, it was there, sir. It was there. it Yes, was sir, it there, was there. right? Some of you, I think they are not able to, press on the save button. So nothing much to worry, I think so. You can very well, mail to them that you have not saved. But yes, if it is not there in the software, nobody can do it, right? So obviously you have to save that also. After submitting that, an overall analysis of attempted and came where, and I checked, I saw my essay part was not included. I have already attempted and saved essay part. So this you please do write to the competent authorities. They will be able to tell you according to that. So guys, now coming to the analysis part of our your coming to the analysis part of your ZAT 2023. Yeah, Yogesh. Yeah. So analysis part. Let us first look at the verbal part. I think verbal was typical ZAT verbal, right? I will not, say it was difficult than the previous year or it was at a lower level. To me, it sounded like typical ZAT verbal, right? Anything you want to add, Yogesh or Parul or Jayant, to this? But still, I think it was easier than the last Easier, year's yeah, previous. because somehow you are able to read the passages, Yes. you are able to get into answers. The critical reasoning questions were also not that difficult, right? Maybe there was this 10 extra minutes also created a good amount of buffer for everyone, because earlier it was 165 minutes, now you are having 175 minutes. क्वांट बीइंग ऑन ए लोअर साइड, क्योंकि क्वांट में क्या होता है कि अगर आपका 4-5 क्वेश्चन अटक गए, राइट, तो फिर पैनिक क्रिएट हो जाता है. That changes the dynamics of the whole paper. So here I think this was not the case. Like if you are doing verbal, you are able to do it. You are doing DILR, it was this quantitative and DI, it was doable. Okay, what is your observation, Parul? Sir, I would VA section. VA, like it was similar to the previous years, I would say. Like Okay, very okay. similar. Yeah, poem was there as it was expected, and Uh-huh. like something related to environment, global warming was there. Global So warming was there, it right? was And in the previous year lines only. yeah, one essay related to that was a bit typical. That essay related to your huh? Inter- Interpretation. interpretation, right. That was I think I found. Rest, what I could see, grammar questions were typical grammar questions. You will have multiple questions there. You have to choose which one is right, which one is wrong. And there were 3 or 4 critical reasoning questions, right? And 2 PJs or 3 PJs? Two. Two Two. PJ. One PJ was 1, 2, 3, 4. Very simple. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. 1, 2, 3, 4. Yeah. Then I was so happy to attempt that. और मेरे को याद था कि यार ये सब लोग को याद रहेगा कि ये 1, 2, 3, 4 आ रहा है. Right. Poem is all about present and past, right? Past and present. Past and present वाला comparison था, right? जयंत, आपका verbal कैसा हुआ? जयंत? Okay. So Yes, sir. हाँ जी, लास्ट ईयर जो हम बात कर रहे हैं, जयंत आपका वर्बल कैसा हुआ बताएंगे? हाउ वाज योर वर्बल? व्हाट इज योर टेक ऑन वर्बल? Sir, it was easy as compared to the last year, but Okay. RCs were a bit tricky.
Okay, so RC was relatively easy. So अगर हम बात करते हैं last year, approximately 9.5 marks gave around 10, your 85%, right? 85, 9.5, 10 के पास में आ रहा था. तो this year it should be around 11, 12, 11. 11 should give you 85. Yes, sir. Can we safely assume? Right? 11 should give you 85 and maybe 9, 9.5 should give you 80. Right. So safe attempt in this is 10 questions at least. 10 क्वेश्चन से कम है तो भाई आपका बीएम एक्सेल का इंडिविजुअल कट ऑफ निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को. ओके, डीएम डिसीजन मेकिंग, न्यूमेरिकल वाला नया चीज था एक तो बार, इस बार न्यूमेरिकल बेस्ड डीआई थी, उसके अंदर देयर वाज गुड अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व. आई डोंट नो, ये टॉपिक का नाम वीए एंड लॉजिकल रीजनिंग लिखते हैं, वहां पे लॉजिकल रीजनिंग का कुछ नहीं आता, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका एक तरीके से कैलकुलेशन बेस सेट डाला हुआ है. चलो व्हाटएवर, anyhow this feedback I have given written for that people. I have written it in essay because I was not in a mood to write an essay after 3 hours of paper. So in that essay I just wrote 3 things for my dear that conducting agency. One is that the paper can be shortened, right? 5.5 घंटे हो जाते हैं because 3.5 hour you sit it in the center, 1 hour before you reach there and 1 hour traveling it takes, भूल जाओ के बाद में भी ट्रेवलिंग लगती है, तो 5.5 घंटे यार बड़ा मुश्किल हो जाता है फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना, इट्स बिट टैक्सिंग. एंड सेकंड थिंग इज योर DI graphs could be compatible with the Yes. online version. फिजिकल में ठीक है, ऐसे बड़े 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 गंदे गंदे ग्राफ मजा देते हैं, ठीक है, बट ऑनलाइन में बंदे देख ही नहीं पा रहे थे किधर किधर कौन सा ग्राफ, कई लोग तो देख के ही छोड़ देते हैं. सर वो पेपर व्यू खोलना पड़ता था उनके लिए. हाँ, पेपर व्यू में भी ना स्क्रॉल नहीं चलता है, आपका माउस का वो स्क्रॉल बहुत नहीं, फास्ट स्क्रॉल हो जाता है, अपन बहुत थोड़ा सा फास्ट स्क्रॉल होता है. एग्जैक्टली. और तीसरा जो मैंने उनको फीडबैक लिखा है वो ये लिखा है कि भाई आप जो LR है अगर डालना ही नहीं है तो सेक्शन का नाम बदल दो, right? So that can be done. Anyhow, okay, DM was इस बार 2-2 वाले DM भी थे, 2-2 वाला DM भी था, है ना? Because previous year typically you are getting 3 questions per DM. So DM cutoffs, somehow I find this year's DM more logical, right? There was less weird answers. पता नहीं आपका क्या व्यू है? मतलब Yes, लास्ट sir. ईयर में कुछ ऐसे क्वेश्चन ज्यादा थे जिसमें आपको लग रहा था अच्छा यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. इसमें हार्डली 3-4 क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें लगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. अब रिजल्ट बताएगा कि हाउ मेनी ऑफ देम आर राइट, हाउ मेनी ऑफ दैट आर रॉन्ग, बट आई वाज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल अटेम्प्टिंग DM. या पारुल एंड योगेश? Sir, I think options were less tricky this year, and लास्ट ईयर अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन बिल्कुल ही डिफरेंट थे. वो मुझे लग नहीं रहा इस बार इतना ज्यादा वेरिएशन होगा, तो अच्छा था इस बार. पारुल? Yes, sir. Like it was less trickier than the previous years, I would say. And that new thing, it was like very time consuming, considering all the options. So that is the one question that I've left in the paper. One calculation thing. जी, तो आपका जो क्वेश्चन था एक टाइम कंज्यूमिंग था, एग्जैक्टली. सो देयर शुड बी अ बैलेंसिंग इम्पैक्ट. I don't think that DM's cutoffs and DM's percentile should change, right? As previous year, it should remain by and large at the same level only. But as we come to a section called quant, right? हाँ, तो वहां पे आपका क्या विचार है? इट वाज वेरी इजी, आई वुड से. नहीं, वेरी इजी तो नहीं कहेंगे, मतलब अगर जो जैट का जो हमारे माइंड में होता है ना कि जैट के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी लेयर्ड होते हैं, माइंड में जो पिक्चर बनी होती है हाँ, वो उसके कंपेयर बिल्कुल कुछ अलग था. ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आप क्वेश्चन ट्राई करते हैं, निकलता है, पर आंसर आ नहीं रहा है, देन यू ट्राई समथिंग एल्स, देन यू गेट इनटू देयर. सो दैट थिंग वाज मिसिंग समवेयर इन द दैट क्वेश्चन. आपका अगर 74 आ रहा है तो 74 ही एग्जैक्ट आंसर सामने पड़ा है एंड यू कुड वेरी वेल सी दैट आंसर, राइट?
और एक वो 20% वाले क्वेश्चन है, तो पता नहीं कितने लोगों को मतलब रिलीफ दिया होगा कि चलो कम से कम एक जैट का क्वेश्चन तो किया. Because I remember 3 years back, especially in 2018 or so, like आप क्वेश्चन शुरू करो निकल नहीं रहा, फिर क्वेश्चन शुरू करो निकल नहीं रहा, कॉम्प्रिहेंड ही नहीं हो रहा है. थोड़े से क्वेश्चन लेंदी थे, बट यस आई थिंक इट वाज on a fairly on a doable side, not typically like that type, right? Layering was also missing this year. इतना लेयरिंग, layered हाँ questions. लेयरिंग था. आई वुड नॉट से लेयरिंग वाज कंप्लीटली मिसिंग, बट वो उस लेवल वाला नहीं था कि आपको मजा आए हाँ. कि भाई, है ना. मैं कहूंगा कि टेस्ट मैच तो था, पर वो जो ऑस्ट्रेलिया की पिच प्ले करती है ना, साए साए बॉल निकलती है, वो नहीं निकली इस बार. ऐसा कह सकते हैं, है ना. टेस्ट मैच तो था, बट वो मजा वाला क्वेश्चन नहीं थे कि आपको क्वेश्चन देख के यही समझ में नहीं आ रहा करना क्या है. ठीक है. तो अगर मैं इसको एक टीचर के पर्सपेक्टिव से डालना चाहूं कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ज्यादा थे नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के मुकाबले. ठीक है. स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम उसको डिफाइन करते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाता है भाई इसमें क्या करना है. इट मे टेक टाइम, बट यू आर एबल टू सी क्वेश्चंस डायरेक्टली. जैसे ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन था आपका, एक वो क्यूब के अंदर पॉइंट वो जाएगा, root 5. शॉर्टेस्ट पाथ अलोंग द सरफेस. ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. उसके बाद आपका जो 3 लिक्विड्स दिए हुए हैं उसके अंदर वो मिक्सिंग एलिगेशन वाला एवरेज वाला स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, राइट. एंड देन देयर इज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑन योर प्रॉफिट एंड लॉस. वो जो इंस्टॉलमेंट वाला था उसमें माइनस कर करके सीधा सीधा आ रहा था, दैट वाज आल्सो स्टैंडर्ड क्वेश्चन. सो देयर वर मेनी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. वी हैव मिशिका आल्सो विद अस. लेट अस हियर द व्यूज ऑफ मिशिका बिफोर वी फाइनली प्रेडिक्ट द परसेंटाइल फॉर this year and try to close this. Yes, Mishika. Mishika, would you like to add anything to this conversation? See, last year if I see the the quantitative part, around 10.5 marks was giving us 85 percentile, right? So this year I would say this year थोड़ा ऊपर जाएगा ना. 12, around 12. 12 होना चाहिए क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इजी थे, और 12 और 13 भी जा सकता है. तो 90 ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल लास्ट ईयर can you guys tell last year? 30 marks was giving somewhere around this thing, this percentile. 33 were giving you 30 marks was giving you 93 approximately, right? Isn't it? And around 40 you were getting 99.5. Yes, bolo bhai, yes, no? Yes, sir. Yeah. What's your take for this year? I would say it should go slightly थोड़ा change होना चाहिए. Guys, ये जो prediction है ना यार, ये these are rough predictions, don't take it by heart, right? बहुत ज्यादा आपको इसको दिल पे नहीं लगाना है कि सर इतना कम रह जाएगा, ऐसे कैसे होगा. ठीक है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होने वाला है, but yes, there will be difference in as compared to the last year score. लास्ट ईयर स्कोर के कंपैरेटिवली थोड़ा डिफरेंस होगा. आई विल शो यू व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड, राइट. बट बी वेरी क्लियर ऑन दिस के ये वाला जो प्रेडिक्शन है वो कुछ नहीं करना. उसको आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये फाइनल है, राइट. दिस इज नॉट द फाइनल प्रेडिक्शन, दिस इज जस्ट वन ऑफ द योर स्कोर दैट वी हैव ट्राइड टू कंपाइल. सो चलो रफली एस्टिमेट लगाते हैं. अगर हम बात करें भाई, हमारा जो परसेंटाइल है 99 कितने पे आएगा? बोलिए गाइस. 99 परसेंटाइल 37. 37. Okay, anybody else? 37 is one 40, prediction. 40, sir.
40. So I will go with the 40 as the score with for 99 percentile. ठीक है, 39 ले लेते हैं, चलो 39 we can take as a score for 40 percentile, for 99 percentile, right? Okay, for 95 के लिए 34, 35 35 सर. 35 पारुल. So वही 34, 35. आपकी जो वो है उसको थोड़ा कम करते हैं, आपके अटेंशन को मैं दिखाई देता हूं जो मैंने बनाया है, ठीक है, इट मे बी हेल्पफुल टू यू. हाँ जी. सो 39 to 40.5 शुड बी 99 एंड 34, 35 के बीच में 95, 31, 32, 93 and 29, 30, 90 and 20, 22, 70, 75. So this should be the percentile. क्योंकि पेपर डुएबल था, टाइम ज्यादा बढ़ा है, तो नीचे थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा होगा, ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट कम आएगा, ठीक है, क्योंकि 40 क्रॉस करना बड़ी मुश्किल काम होती है. So these are the percentiles, guys. I hope you had a great time. So if you have any question, you can ask, and all those who want to prepare for GDPI, you can very well join us from 10th of January. 10th of January, and those who want to join for SoGo 100, the batch is open and you can be part of it. And I congratulate Parul and Yogesh for getting good calls. I am already, I know that Yogesh has got call from IIM. Parul must have also received a call, but she has yet to check the call. वो हमारे साथ ZAT के लिए अभी क्वेश्चन प्रिपेयर करा रही थी. So thank you very much everyone joining for us. Bye bye, good night, God bless you all. Thank you, sir.